तो गीता में जब हम पढ़ते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द टू टर्म्स धर्म एंड अधर्म? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के हिसाब से कर्म का रियल मतलब क्या है सर? Yeah, that's also very important because कर्म एज वी ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, हम में से हर किसी के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य होता है जिसे कहते हैं, गीता में क्या समझना चाहिए कि कृष्ण का असली रूप क्या है सर? द गीता डिस्क्राइब्स अबाउट दीज 5 थिंग्स। जीव, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। ये जगत में ये 4 चीजों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी लगी रहने वाली है। एक अच्छे इंसान की पहचान हम कैसे कर सकते हैं गीता के हेल्प के थ्रू? गीता के आधार पे एक अच्छा व्यक्ति वो कहलाया जा सकता है जो अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से समझता है। What we should give importance more, whether it is material success or spiritual success? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि भगवत गीता अगर हम देखें, अर्जुन से अपेक्षा की जा रही थी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये शरीर जब भी छूटे ना, भगवान का स्मरण करते हुए छूटे। तो सबसे पहले चैतन्य जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने आपका कीमती समय दिया और ये अवसर दिया कि आप हमारे स्टूडियो पे आए और भगवत गीता जैसी धरोहर पे आज हम इस पॉडकास्ट का शूट करेंगे। टॉपिक हमने डिसाइड किया कि गीता के ऊपर चैतन्य लीलादास जो 17-18 सालों से यहाँ पे इस इस्कॉन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज गीता की तरफ कैसी है और गीता को हम अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करके हमारी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं इन दिस मॉडर्न एज, इस पे आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे चैतन्य जी के साथ। सबसे पहले मैं चैतन्य जी का आभार करूंगा और साथ ही मैं सत्कार करूंगा कि खास वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारी ऑडियंस को आज इस पॉडकास्ट में वो काफ़ी सारी एनलाइटमेंट देंगे और इससे उनकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म होगी। प्रभु जी, सबसे पहले सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा बिफोर वी गो इनटू द डीप साइंस ऑफ भगवत गीता, गीता के हिसाब से कर्म का रियल मतलब क्या है सर? Yeah, that's also very important because karma, as we typically understand karma to be actions, but if we understand from the perspective of the Bhagavad Gita, karma doesn't mean just actions. Karma means actions with awareness of the results of those actions, or in other words, responsible actions. So therefore the Bhagavad Gita describes that how whatever we do in this world has a repercussion. If that's a good activity, you are bound to experience good repercussions. If that is a not recommended activity, you are in for a surprise. And at the same time, we find that this law of karma, it's a detailed subject once again, right, but then right. How this law of karma is something which is very, very precise, is very subtle. How this law of karma works is very difficult to ascertain, as the Bhagavad Gita itself exclaims, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यंश्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. Now the Bhagavad Gita describes 3 types of activities: good activities or punya, not recommended activities or sinful activities or papa, and then recommended activities or akarma. So good activities are those which we feel this is right and this should be done and it has a good outcome. So still that is my decision, that is my thought, it's my choice. That is a good activity. Doing welfare work for others, doing something which is beneficial for me, for others, that is technically known as karma. Then there is vikarma. Vikarma is the sinful activities which has a sad repercussion. And then there is the recommended activity, or act as per the advice of the scriptures, as per the advice of people who are learned in the wisdom of the scriptures. So that is known as akarma.
So when you perform this akarma or recommended activities, then you are not subjected to the results of your activity. Perfect. To give you an example, just like when a soldier is firing and shooting bullets on a border and killing enemies, he's awarded with a Paramveer Chakra. But when that same soldier, if he comes to his hometown and he takes out his revolver and he just out of his whim he shoots a person, he'll not be awarded a Paramveer Chakra, because at the border he is performing the same activity under instruction as per the desire of the superiors, whereas the same activity when done whimsically out of his own choice, he is liable for a punishment. Right. So similarly, we understand from the Bhagavad Gita that how one has to be aware what kind of activity one should be involved in. And specifically, the verse I just quoted refers Gahana Karmano Gati. How the repercussions of these activities will manifest when and where, in what shape and form, is very, very difficult to ascertain. So, अच्छे कर्म हमें अच्छी गति और अच्छा सुख कभी प्रदान करेंगे भविष्य में, ये पहले से पूर्व निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म वो कब और कैसे उसका आउटकम आएगा पहले से निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। जस्ट लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम महाभारत, धृतराष्ट्र, इट सेड दैट many lives before Dhritarashtra had killed 100 eggs of a sparrow, Right. because of which he was to suffer the same pain which the mother sparrow had suffered. But because Dhritarashtra didn't have sufficient piety to give birth to 100 sons, so he had to take a lot many births to accumulate so much of piety so that he is able to give birth to 100 sons and then suffer the death of all of those 100 sons. So therefore, Bhagavad Gita defines karma as responsible activities, activities with an awareness of that there is a awareness of the repercussions to those activities. Whether it is a good karma or bad karma. Whether it's a good karma or bad karma. But then over and above the good karma and the bad karma is the recommended activity or the suggested activities जो शास्त्र द्वारा, जो पूर्व आचार्यों के द्वारा, जो वर्तमान गुरुओं के द्वारा जो बताए सिखाए जाते हैं, like that. ब्यूटीफुल। आज के वर्ल्ड में हम देख रहे हैं ज़्यादा करके एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली यूथ अगर देखें, दे आर रनिंग आफ्टर मटेरियल सक्सेस। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू गीता, what we should give importance more, whether it is material success or spiritual success? या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि भगवत गीता अगर हम देखें, अर्जुन से अपेक्षा की जा रही थी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे युद्ध करने के लिए, इन वन सेंस टू reclaim the throne of Hastinapur, right? है ना? Right. So someone may say that's for a material success, right? है ना? Right. ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, वो हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, right. राजा बनने के लिए, right. अभी राजा का ऐश्वर्य जगत में सबसे बड़ा होता है, yes. you know. So how is it that we can understand that whether it was for material success or spiritual success? Now, it's very interesting that spirituality doesn't negate aspiration for material success. Okay. Just like Krishna, he did not dissuade Arjuna कि no, this desire of this war should not be fought because you will attain material success. In fact, Krishna was the one who wanted this war to happen, right? Because Krishna wanted dharma to be reinstated. Right. And therefore, coming back to our discussion on material success, on a practical note, हम में से हर किसी के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य होता है जिसे कहते हैं
हमारा स्वधर्म और our conditional duties. Right. So these conditional duties are those duties which help us live a happy and comfortable life Perfect. in this lifetime. Perfect. है ना. इस प्रकार से चाहे हम पढ़ाई करें, इस प्रकार से चाहे हम अपने जॉब में कार्यरत हों, या इस प्रकार से हम अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारा इस जीवन में जो एक्सपीरियंस है वो सुखद और आरामदायक हो सके. सो दिस इज one duty, which is the swadharma or the conditional duties. Now, over and above this swadharma is also the sanatana dharma or the eternal duty of the soul. This eternal duty is something which spans beyond the duration of this particular life. So just like a student in a 10th standard doesn't just bother about his subjects in the 10th standard. He's also concerned about what when I pass out of school. You know, where am I going to land up once I give my board exams? You know, what will be the options before me if I perform well in the exams? What are the options that will be left for me if I don't work hard today? Right. So similarly, every individual should also try to know, inquire, and work towards the future which is not immediately visible. That eternal future, that future which is over and beyond the presence of this immediate body that all of us are in. उसे सनातन धर्म कहते हैं, या ड्यूटी ऑफ द सोल towards establishing his lost connection with the divinity, with the supreme, like that. So this is the importance of material success and spiritual success. Yeah. So the Bhagavad Gita, on one hand, also recommends that you should be endeavoring for material success, but that material success should not intervene, should not stop your endeavor for your spiritual success. So both have to go hand in hand, just like two tracks of a railway line. Like that. तो हाँ, हमें इस जगत में सक्सेसफुल और खुश रहने के लिए जगत में काम करना पड़ेगा. You know, you have to work hard. Krishna wanted Arjuna to fight hard. You know, it's not that Arjuna wanted to run away from the battlefield. You know, take sannyas and, just give away everything. Right. Krishna said nothing doing. You have to do it. You have to do it. No. You have to do it with determination. You have to fight this war. You have to win the kingdom of Hastinapur. Like that. So yes, what is more important is having that balance, striking that balance. That yes, I have spiritual responsibilities and I have material responsibilities. Just like we know and understand, currently we are balancing responsibilities, right? We have responsibilities towards our own body, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारे एकेडमिक या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, हमारे फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. हम ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑलरेडी हम बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ वन सेक्शन विच needs also to be incorporated, if not done yet. The spiritual responsibility, like that. So therefore, both the material success and spiritual success have to go hand in hand. And the purpose of material success is not, once again, is not self-enjoyment. The purpose of material success should be for the welfare of the larger society. Just like in English, there is a saying that when you are blessed financially, don't increase the quality of your life. अगर हम गीता की बात करें सर, तो गीता में जब हम पढ़ते हैं, how do we understand the two terms, dharma and adharma? Yeah. So we find in the Gita there are these two parties, the party of the Pandavas
and the parties of the Kauravas, Kauravas. the party of the Kauravas. And the whole purpose for which Gita was spoken by Lord Sri Krishna was to establish dharma. Even in the Bhagavad Gita, Krishna says that yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. The very purpose of my descent is whenever there is a decline in the religious principles, I incarnate to once again re-establish those principles of religion. Right. So therefore, the whole purpose of Gita, the whole purpose of Krishna wanting Arjuna to fight was to reinstate dharma and show to the entire world that adharma is not beneficial, to show to the entire world that adharma ultimately leads to your defeat and adharma ultimately leads to the destruction of not just yourself but your entire family. So again, dharma means knowing one's all-round responsibilities in a holistic manner, and adharma means just living by one's instincts. Just like we see the Pandavas, instinctive behavior they say is for the animals, but then we find even in the human society today, people going by their instinct just to establish their superiority over others, just to make sure that they have amazing, huge amounts of opulences in the world today. And for accumulating all of those opulences, whether you have to put down people, whether you have to pull others' legs or stab them at the back, do anything and everything but get on to the top. Yes. Like that. Yes. But the sad thing is, even the people who are at the top, it's not that they're completely satisfied and happy, right? So it's not that, by hook or by crook, you just make it to the top and that's success. That's not what Gita shows. Because the Kauravas, they tried everything under the sun, right? They tried to harm the Pandavas. They tried to kill the Pandavas. They tried to disrobe Draupadi in the midst of the entire assembly. Humiliate the Pandavas in one sense. They tried everything, but the Gita shows that ultimately, all of this just led to their own destruction. So therefore, again, coming back to dharma, it's our responsibility to know what are the dharmic principles. It's our responsibility to know the wisdom of the Shastras and live a life based on that wisdom. I would like to quote a very pertinent shloka from the Gita in this regard. The Bhagavad Gita mentions, Yah Shastra Vidhim Utsrijya Vartate Kamakaratah Na sa siddhim avapnoti na sukham na param gatim. So this verse mentions यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों के सजेशंस या रिकमेंडेशंस को नेग्लेक्ट करके वर्तते कामकारता, just lives as per his own whims and fancies and desires. यह शास्त्र विधिम, जो शास्त्रों के विधि को उत्सृज्य नेग्लेक्ट करके, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः. What's the result of such a action? न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम. उसको किसी भी अपने एंडेवर में परफेक्शन नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होती है. न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम. Such a person who just does or lives life the way he wants is never satisfied in the long run. ठीक है, immediate satisfaction you might derive, but substantial long run में न सुखम, एंजाइटी से भरा हुआ रहेगा जीवन, सुख नहीं रहेगा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं होगी. न सुखम न पराम गतिम, you will never get to the
correct destination, the right goal of life, like that. And therefore it's very important for us to know what is dharma, what is adharma, and choose the path wisely. अगर हम कृष्ण की बात करें तो यहाँ पे कृष्ण के हमने दो रूप देखे हैं. एक देखा है एक छोटे बालक का रूप, Right. जो काफ़ी सारे डीमंस को किल करता है इन अ वेरी यूनिक वे. Right. एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं योगेश्वर का रूप. Correct. तो एक्चुअल में गीता में हम क्या समझना चाहिए कि कृष्ण का असली रूप क्या है सर? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है हितेन जी, कि कैसे भगवत गीता में वो देर आर दीज 5 टॉपिक्स आई वाज मेंशनिंग दैट आर डिस्क्राइब्ड. द गीता डिस्क्राइब्स अबाउट दीज 5 थिंग्स: जीव, द आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग बीइंग which we discussed. Right. The Gita describes about the identity of the Supreme, Ishvara. Jiva, Ishvara, Prakriti, the world that we are staying in. उसके बारे में 15th chapter we were discussing. Right. प्रकृति, काल, समय का चक्र कैसे चलता है, and karma, which we also discussed. Right. So coming back to the subject of Ishvara, the Gita describes that how one has to see Krishna as that supreme living being. Now it's very important for us to note that it's not that we are putting this label on a person named Krishna whom we already know. अच्छा, कृष्णा, भारत में तो हम बचपन से जन्म हुआ है, हमने बचपन से राम कृष्ण के बारे में सुना है, और at one point of time during a podcast you put a label on Krishna that okay, he is the supreme. It's not that way. The Shastras give us the definition of who could be Bhagavan. Okay. Now very interesting again. बलवान किसे कहते हैं? जिसके पास अमेजिंग बल होता है. Yes. दयावान किसे कहते हैं? जो बहुत दया दिखाता है. Right. रूपवान कहते हैं जिसके पास ब्यूटी होती है. उसी तरह से धनवान बोलते हैं जिसके पास बहुत धन होता है. So now what is Bhagavan? So the Vishnu Puran describes Bhagavan is someone who is the possessor of opulences or aishwarya in unlimited quantities for eternity, since eternity. Perfect. So the Vishnu Puran describes 6 of these opulences: beauty, knowledge, wealth, strength, fame and detachment or renunciation. तो ये 6 ऐश्वर्यों के बारे में विष्णु पुराण says that someone who is the possessor, who is the owner, controller, enjoyer and source of all of these opulences since time immemorial can be called Bhagavan. And because अभी इस जगत में भी हम देखते हैं कि कैसे किसी के पास एक ऐश्वर्य रहता है तो दूसरे लोग उनके पीछे भागते हैं. किसी के पास धन रहता है तो लोग उनके पीछे जाते हैं. स्कूल्स और कॉलेजेस में कोई सुंदर रहता है तो लोग उनके पीछे भीड़ लगती है. राइट. किसी के पास शक्ति होती है, सो पीपल टेक इतने सारे बाउंसर्स को बुलाते हैं इवेंट्स में. राइट. सो एनीवन हु हैज इवन वन ऑफ दीज ऑपुलेंसेस अट्रैक्ट्स पीपल. Attracts people. Yes. Now imagine someone who has all of these opulences put together, which is very rare in the world today. Yes. कोई अगर बुद्धिमान होता है तो आवश्यक नहीं है कि वो सुंदर भी हो. Right. कोई अगर धनवान है तो आवश्यक नहीं कि वो बलवान भी हो या दयावान भी हो. Right? Yes. But then someone who has all of these opulences in unlimited quantity can be given the crown of Bhagavan. And because such a person attracts everyone, right? One of the name of such a Bhagavan, such a person is also Krishna. So Krishna is a word by which Bhagavan is referred to because he is all attractive. इसलिए उनका एक नाम कृष्ण है. उनके और भी बहुत सारे नाम हैं,
कुछ नाम उनके रूप के बेसिस पे इन महाराष्ट्र वी वर्शिप विठ्ठल. वाई विठ्ठल? बिकॉज सुंदरते ध्यान उभे विटवरी करकटवरी ते सुनिय. Right? Standing on a brick, your form. So some names are based on form. Some names are based on relationships, like Jagannatha, Srinatha. He's related to Lakshmi Devi, Srinatha. He's related to the entire world, isliye Jagannatha. Some names of that Supreme Bhagwan is based on his quality, just like Venkateshwara. Venkateshwara in Tamil, it means someone who has the power to annihilate or vanquish all of your sins, and that therefore his name is Venkateshwara. Like that. Some of his names are based on his activities. Ras Vihari, Giridhari. पहाड़ को उठा लिया अपने छोटे बाएं हाथ के छोटी उंगली पे पूरे पहाड़ को उठा लिया, इसलिए गिरिधारी. Like that. Ras Vihari. Like that. So when we talk about Ishvara is someone who is the supreme owner, proprietor, controller and enjoyer of these 6 opulences which we just discussed. इस पिछले 10 मिनट के वार्तालाप में कृष्ण को कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्वालिटीज़ कृष्ण के अंदर है, ये सर ने हमें बताया. लेकिन अगर हम हमारी डेली लाइफ की बात करें, how do an normal layman or an individual starts recognizing a spiritual growth in himself or herself, sir, right now? हाँ, ये भी बहुत आवश्यक है. सबसे पहले तो a person has to be honest कि क्या मैं खुश हूँ. पहला प्रश्न. इतना प्रयत्न कर रहा हूँ मैं, इतनी चेष्टा कर रहा हूँ, इतने प्रकल्प कर रहा हूँ, बट am I actually satisfied to the core? That's the first honest thing that one has to ask. Now, the second question one has to ask, because everything starts by being, introspective, by questioning oneself. कि ठीक है, अगर मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास भी करता हूँ, why is it that I am in such a world जहाँ रह के मैं समस्याओं में पड़ जाता हूँ. मन मेरे समस्या का कारण बनती है, कभी दूसरे हमारे समस्या का कारण बनती है, दूसरे प्राणी, whether that's a mosquito, whether that's a cockroach in the home, whether that's a rat or a cat or a neighboring dog who barks all night, सोने नहीं देते, या फिर पड़ोसी हो गया, या फिर कभी कभी पड़ोसी राष्ट्र भी हो जाते हैं कभी कभी. Like that. Why is it that there are always sources of misery in my life? इतनी बारिश हो जाती है, इतनी कभी गर्मी पड़ने लग जाती है, कभी ठंड तेज़ हो जाती है, कभी अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, कभी अभी पहाड़ों में जाके देखिए इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. Why is it so? No, we all want to be happy all the while, but it seems that we are in the wrong place. And the Bhagavad Gita explains the nature of this place. Janma mrityu jara vyadhi dukha doshanu darshanam. ये जगत में ये 4 चीज़ों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी लगी रहने वाली हैं. और इस जगत के ऊपर भगवद गीता क्या लेबल डालते हैं? दुखालयम अशाश्वतम. ये जगत क्या है? दुख आलय है. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा. भोजनालय में क्या मिलता है? खाना, भोजन मिलता है. मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा. राइट. ग्रंथालय में ग्रंथ, चिकित्सालय में चिकित्सा. राइट. Similarly, if this place has been labeled by the manufacturer, right, in the official manual, that this is the place, like on every real का juice you will find that ये sweet है, ये थोड़ा ऐसा होगा. हाँ, तो उसी तरह से इस जगत के ऊपर लेबल डाल दिया है भगवान ने कि ये जगत क्या है? दुखालय. Expect
trials and tribulations and miseries. So one has to question that why is it that I am in the wrong place? What can I do to get out from this wrong place, from this place of anxiety, kuntha, to Vaikuntha, to that place जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. यहाँ पे दूसरों को इतना प्यार करने के बाद भी अफसोस क्यों करना पड़ता है? हमारी अपेक्षाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं? Because we have to understand that everyone is not capable of reciprocating in an unlimited manner to the love that we expect. है ना? हम भी नहीं रेसिप्रोकेट कर पाते दूसरों की अपेक्षाओं से, है ना? हमारे पेरेंट्स हमसे काफ़ी कुछ अपेक्षा करते हैं, हमारे घर वाले हमसे काफ़ी कुछ अपेक्षा करते हैं, हमारे जॉब वाले हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम कहीं तो पहुंच के रह जाते हैं. क्यों? हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है. एंड देयरफॉर वी विल बी अनलिमिटेडली एंड अनइंटरप्टेडली हैप्पी only when we are in the constant association with someone who is capable of reciprocating to that love, who is capable in fulfilling all of our expectations like that. Now those expectations we know it can't be just material expectations. जैसे लोग भगवान के पास जाते हैं, अपना लिस्ट लेके जाते हैं, धनम देहि, जन्म देहि, this देहि, that देहि, everything. So the Supreme is not a shopkeeper that you just go and bang your list on the desk and push your money and the shop owner is bound. No, the Supreme is Swarat. Just like the father, he knows what is best for the son. So the small child may play tantrums और एकदम पूरा हुड़दंग हंगामा करे घर पे, नहीं मेरे को चाहिए 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 चाहिए. पिता को मालूम है कितना कब देना है और कितना कब शांत करके रखना है. So just like a loving father, he knows. But then if the child is favorably disposed towards the father, is willing to obey the desires of the father, then the opulence of the father is his. Like that. अगर हम गीता की बात करें, गीता की जो टीचिंग्स है, गीता के जो श्लोक्स है इतने सारे, how does that help us to live in this modern world? एंड हमारी जो डेली स्ट्रगल्स है उसे ओवरकम करने में गीता के कौन से श्लोक, कौन से अध्याय हमें हेल्प करते हैं सर? हाँ, हम अगर भगवत गीता के टॉप 5 प्रैक्टिकल लेसन्स की अगर हम बात करें, सो आई कैन ज़ीरो इन ऑन दीज 5 श्लोकास फ्रॉम द भगवत गीता. दीज आर 5 S. The very first thing is understanding about our own identity. Like I mentioned, dehino asmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara praptis dhiras tatra na muhyati. So when we understand our swarupa, our right identity over and above the external covering of the body, but being connected as a amsha of the Supreme, Mamayva amsho jiva loke jiva bhuta sanatana. So when we understand ourselves as such, it leads to the second S, which is seva. That how as seva, we understand that yes, when I am here in this world, I have to perform my duties. Right. Both the kind of duties, material duties and spiritual duties. Yes. And even while performing material duties, the Gita mentions, which is the second important shloka which we have been hearing since childhood, karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. That yes, you have a right to perform your duties, but the results of your duties or the outcomes of your duties is not solely dependent on just your endeavor. The 18th chapter, there is a beautiful verse which describes 5 factors which contribute to the outcome of any of our activities. For the dearth of time, we don't have so much time to get into the detail, but in the 18th chapter, there is the shloka, adhishthanam tatha karta,
karanam cha prathagvidham. So the Bhagavad Gita explains that how there are more than just our own endeavor which is a contributing factor to the outcome. So the Gita teaches us seva or performance of duty without attachment. Yes, I have a duty to perform my responsibility, but I don't have the right to the outcome of such a person, such a activity. And when we understand this, we focus more on our endeavor than the outcome. Even for a small, even for a school student, the school student is expected to focus more on the studies on hand, rather than the outcome of the exams or the results, that. So something which is very, very practical. Now, after understanding Swarupa, after understanding seva or performance of duty without attachment, the Gita also teaches us sanyam, or controlling the mind. Because the mind is very, very easily swayed by the senses, and the senses are swayed by the sense objects around in this world. तो इंद्रियां हमारे इंद्रिय विषय वस्तुओं से खींची जा रही हैं और मन इंद्रियों द्वारा खींचा चला जा रहा है. बट द गीता डिस्क्राइब्स दैट इफ वन जस्ट लेट्स हिज माइंड go as per the dictations of the senses, one is in for big trouble. And therefore the Gita describes the nature of this world. The Gita describes that this is a world of dualities, and in this world of dualities, one has to be equipoised, which is the fourth thing. So talking about the mind again, the sixth verse of the sixth chapter describes that how for a person who has controlled his mind, the mind is the best friend. Yes. And for a person who has an uncontrolled mind, it's the worst enemy one can have. Yes, yes. And when there is a lack of this sanyam, तो फिर व्यक्ति क्या होता है? फिर व्यक्ति सम नहीं रहता है, इक्विपॉइज्ड नहीं रहता है, हमेशा हैंकर करता रहता है. थोड़ा सक्सेस मिलता है बहुत खुश हो जाता है, थोड़ा फेलियर मिलता है बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है. आजकल तो हम देखते हैं ऐसे लोग ऐसा चुटकी में सुसाइड कर लेते हैं. I mean it's such a be a little equipoised, which is what Gita teaches us, that the nature of this world is that this world is filled with dualities. This world, there will be always two sides of the coin simultaneously existing. And the Gita mentions matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkhada agama apayo anityas tam stitikshasva bharata. That the happiness derived from the interaction of the senses with the sense objects gives birth to misery, has misery within the womb. Matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkhada agama apayo no anityas. It has a beginning, it has an end, and it is non-permanent, it is temporary in nature. And therefore Krishna says to Arjuna, tam stitikshasva. Try to tolerate these dualities. ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, थोड़ा टॉलरेट करना सीखो. पहले हम देखते थे people used to be much more tolerant. अभी थोड़ी गर्मी होती है, हाय एसी कहाँ है, एसी कहाँ है. हाँ, अभी पहले ठंडी होती थी, people used to be a bit more agile. But then today day and age we find, especially being in Bombay, where always you have a not so hot, not so cold weather. It's so difficult for Mumbaikars when they go out, in the winter season to the northern Himalayas, or in the the summer season towards the eastern side of Rajasthan side. It's so difficult to adapt. And therefore tolerance is something which Gita teaches us, because if we learn this virtue of tolerance, we'll continue with our duties in spite of these presence of these dualities. And finally,
what Gita teaches us is samarpan or sharanagati. And this is the culmination of the Bhagavad Gita, wherein Krishna puts down his final word. Sarv dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. So Krishna says, just put aside all of your concepts. Put aside all of your ideologies. Put aside all of your arguments. Put aside all of your priorities. Mam ekam sharanam vraja. The Gita demands surrender because that is in your welfare. Krishna is Aptakam. Krishna is Swarat. He doesn't need the cooperation of, one particular jiva. Just like the father, he has amazing amount of wealth. He doesn't need, the cooperation of a child who is playing tantrums. Right. But then, in the interest of the child, He demands कि नहीं ऐसे करो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ऐसा करोगे खुश रहोगे. Right. So that's what Krishna says. Sarv dharman parityajya. Put aside your thoughts here. Try to understand. It's not something very very substantial. Try to understand what I have to say to you. And therefore, sarv dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Just hear to what I have to say to you. Aham tvam sarva papebhyo. I'll take care of all of your, past papa. Arjuna was very much worried कि इतने सारे क्षत्रियों को मैं मारूंगा तो इन सब के मारने का पाप तो मुझ पे आएगा. How will I bear all of these sinful reactions? But Krishna is saying, aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami. I will deliver you. I will take you from this kuntha to Vaikuntha. Antakale cha mam eva smaran muktva kalevaram. Yas prayati sammad bhavam. Nahi ati atra shamsya. So Krishna says that if you just surrender unto me, putting aside all of your concepts, putting aside your ideologies, and I'll take care of you. Don't worry. Don't you worry. Ma suchaha. He gives that blank check. You need not worry. You need not worry. You need not worry. इस पिछले 10 मिनट के वार्तालाप में आपने कई बार सरेंडर वर्ड यूज़ किया कि यू हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, यू हैव टू सरेंडर टू दैट सुप्रीम लॉर्ड टू गेन दैट वैकुंठ प्लेस. लेकिन अगर हम पीस की बात करें, जो आज हर एक ह्यूमन बीइंग भाग रहा है कि दे नीड पीस, इनर पीस. इफ वी रियली सरेंडर टू गॉड, कैन वी अचीव दैट इनर पीस? The Gita speaks the answer to this question. This is the last verse of the 5th chapter of the Bhagavad Gita, wherein Krishna says that one who understands me as I am. So he says, Bhoktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarva bhutanam gyatva mam shantim richati. So we are talking about peace, and this is the peace formula that Gita gives us. The Gita describes Krishna as Suhrid Sarva Bhutanam. Now a person is anxious or not peaceful when he or she is insecure. Pata nahi whether the person is wanting my welfare or is he going to harm me. जब भी वो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है तो व्यक्ति पीसफुल नहीं होता है ना. Yes. लेकिन when you are confident that the person that I am with, he is my well-wisher, he is my suhrid, he is worried about me, is concerned about me, and he wants my well-being. So this verse explains or identifies Krishna as Suhridam Sarva Bhutanam, not just you or he or any particular individual, of all living beings. He is the Suhrid. Do not doubt him. Do not doubt him. So one who understands Krishna as the ever well-wisher or the supreme well-wisher of all living beings. Gyatva Mam, one who understands me as such, as the
Bhokta of everything, Bhoktaram Yagya Tapasam of all austerities and sacrifices, Bhoktaram Yagya Tapasam, Sarvaloka Maheshwaram, one who understands me as the owner of everything that exists. Right. Sarvaloka Maheshwaram. And Suhridam Sarvabhutanam, one who understands me as the ever well-wisher of all living beings. Gyatva Mam, one who understands me as such, these three things, Shantim Richati. Such a person is Beautiful. peaceful कि अरे मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हूँ जो केपेबल है और केयरिंग है. इस जगत में ये दोनों क्वालिटीज एक साथ मिलना बहुत रेयर है. Yes, है ना? yes, yes. Someone might be caring, wanting to help us, but may not be capable. Capable, yes. And there might be people who might be capable, but might not be willing Caring. to help, might not be caring. But if I am confident that I am with such a person who is amazingly capable and who is unlimitedly caring, Gyatva Mam Shantim Richati. So yes, the Gita helps us understand that if we understand Ishvara, which is one of the 5 subjects of the Gita, if we understand Ishvara in the right context, I'll be peaceful. अगर हम राधा कृष्ण की बात करें तो उनकी प्रेम कहानी गीता में कैसे हमें डिस्क्राइब, उस पर्टिकुलर प्रेम कहानी का कैसे हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है गीता में सर? Well, the Bhagavad Gita doesn't talk a lot about Srimati Radharani because the Bhagavad Gita is placed in the middle of the Mahabharata, and Mahabharata is a real world scenario. So the Bhagavad Gita as such is very much aimed at improving the understanding, improving the activity or the responsibility of the audience. ये ऑडियंस के वेलफेयर के लिए भगवद गीता में बात हो रही है. भगवद गीता इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग the determination of Arjuna in terms of understanding his duty and acting as per that duty. So Bhagavad Gita as such doesn't talk anywhere about Srimati Radharani. Okay. But of course there are very many other scriptures which describe about the position of Srimati Radharani, which describes about the nature of exchanges between both of these exalted personalities. Especially we are discussing this on the eve of Radhashtami, which happens to be tomorrow. So yeah, so speaking about Srimati Radharani, it is said that Krishna, he has a variety of energies who cooperate in his enjoyment as the Supreme Personality of Godhead. And speaking about his internal energies, there are 3 categories, could be a bit technical, but the 3 categories are Samvit, Sandhini and Hladini Shakti. So the Samvit Shakti is the Chit Shakti, which maintains everything. And then Sandhini Shakti is Sat Chit, which keeps everything aware. That is the Sandhini Shakti. And Hladini Shakti is which facilitates the enjoyment of Krishna. So Srimati Radharani is the manifestation of that Hladini Shakti. Like that. Perfect. अगर हम गीता के हर एक श्लोक या हर एक अध्याय की बात करें तो उसमें से 5 ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या हम देंगे हमारी ऑडियंस को टू फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ? इस पर्टिकुलर ग्रंथ से हम क्या सीखेंगे सर? पहली चीज़ तो कैसे हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना है, केवल इंद्रियों के वेग से नहीं जाना है. नॉट जस्ट गोइंग बाय इम्पल्सेस बट कंट्रोलिंग द माइंड इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what is beneficial and what is not for me. That's the very first thing I would say. The second thing is tolerating these dualities, क्योंकि जीवन में कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी सक्सेस आएगा, कभी फेलियर भी आएगा, कभी सेटबैक्स आएंगे, कभी डिजेक्शंस आएंगे, निगेटिविटीज़ आएंगे.
अगर हम टॉलरेंट रहना सीखेंगे, विच गीता वेरी हेविली वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट्स द पावर ऑफ टॉलरेंस, वो तीसरी चीज़ मैं कहूँगा which Arjuna, which we haven't spoken till now, but I feel it's very, very important, is one should not be confident that what I think is the best. One should have that humility in trying to approach a person who can think about our betterment. Just like Arjuna, after speaking everything, he is admitting that बोलने के लिए तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, but looks like there is a flaw in my understanding. Why don't you correct my understanding, Krishna? So similarly, Gita teaches us that humility, कि सबसे पहले तो माइंड कंट्रोल सिखाती है भगवत गीता, दूसरा टॉलरेंस सिखाती है, तीसरा ह्यूमिलिटी सिखाती है कि इट्स नॉट दैट हम जैसे जीवन जी रहे हैं वो बेस्ट है, नहीं. Seek advice, seek betterment, explore avenues for improvement in life, and that's only possible when one is humble. For an arrogant person, it's very, very difficult. It's not possible. And then next thing I would say is trying to understand the goal and purpose of life, not just being busy like a football player in the middle of a football field, busy with the ball, sweating, but doesn't know the goal, where to take the ball to. So similarly, we don't just have to be busy, अरे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये करना है, वो करना है, हज़ारों चीज़ें करनी है, लेकिन पता नहीं है जीवन में पहुंचना कहाँ है ना. तो वो गोल पता करना है. एंड द गीता डिफाइंस द गोल ऑफ लाइफ. द गीता मेंशन 8th चैप्टर मेंशंस अंत काले, गोल क्या होना चाहिए. अंत काले, जीवन का हर किसी का अंत होने वाला है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पेसिसिज्म. अंत काले चम्मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. ये शरीर जब भी छूटे ना, भगवान का स्मरण करते हुए छूटे. परफेक्ट. So Gita defines that goal of life. So one should inquire and endeavor to progress by all of one's endeavors. ठीक है, बैलेंस करते रहना पड़ेगा सारी चीज़ों को, अपने मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Balance is the name of the game actually. Yes, it is. And then with all of that balance, धीरे 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 we have to approach the goal. Practice our life in such a manner that अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, so that यह प्रयाति स मद्भावम, हम भी इस कष्ट भरे जगत से निकल के, इस दुख खाले से निकल के उस वैकुंठ में जा पाए. गीता की बात करें तो यहाँ पे धर्म और कर्म, इन दोनों के बीच का बैलेंस, एक इजी टिप हमारी ऑडियंस के लिए कैसे बनाए वो सर? आई वुड से, जैसा मैंने बताया कि हर बैलेंस को करने के लिए बेस्ट रहेगा, आई वुड से, सर्च आउट फॉर द एसोसिएशन ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सन. Search out a guide who is balanced in himself and who is willing to help us. Perfect. Perfect. So, now even speaking about the Bhagavad Gita, I might procure a copy of the Gita online and set out to read it. But it's not that easy to once again take out all of these nuggets of wisdom from the pages of the Gita. It's possible only when we seek help, accept a friend, accept a mentor, accept a guide in our lives who can help us strike that balance. Otherwise, हमारी टेंडेंसी होती है हमेशा एक्सट्रीम्स पे जाने की, कभी मटेरियल सक्सेस के एक्सट्रीम्स पे जाने की, कभी स्पिरिचुअल सक्सेस के एक्सट्रीम्स पे जाने की. थोड़ा सा सक्सेस मिला, कूद गए मटेरियल एंडेवर की तरफ. थोड़ा सा फेलियर मिला, सब बेकार, सब फालतू, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, लाइक दैट.
but when we are seated next to a balanced person, तो फिर हम अपने धर्म और अपने कर्म के बीच में कैसे बैलेंस स्ट्राइक करना है वो हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं. अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटेंशन सर? हाँ, इंटेंशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इंटेंशन के अगर एक्टिविटीज़ होंगी तो वो रिचुअलिस्टिक हो जाएंगी. यू नो, देयर इज दिस वर्ड रिचुअल, बट देन व्हेन दीज रिचुअल्स आर accompanied by an understanding of the purpose of these rituals, the spirit behind these rituals, that is when the activity becomes spiritual. Perfect. The spirit and the ritual gives birth to a spiritual activity. Beautiful. तो इसलिए भारत में भी हम देखते हैं कई बार लोग बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, इत्यादि करते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू नो पीपल नो व्हाई आर वी डूइंग व्हाट आर वी डूइंग. सो देयरफॉर इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो द पर्पस बिहाइंड ईच ऑफ आवर एक्टिविटीज़. ठीक है, हम आरती करते हैं, क्यों आरती करते हैं? हम प्रदक्षिणा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, क्यों परिक्रमा लगाते हैं? व्हाट्स द डीपर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़? And to know all of these purpose and spirit, one has to be willing to shell out some time. थोड़ा समय निकालना पड़ता है. You know, nothing happens automatically. Perfect. You know, you need association and you need to take out some time of yours to understand the purpose. Or else हम तो भले ही कर लेंगे, लेकिन कल को हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. Especially you know the Gen Z generation, you know, when they ask us, you know, the purpose behind mama ये क्यों करते हो? I was just watching an ad on YouTube of this yatra.com. आखिर में इस पॉडकास्ट को सम अप करना चाहूँगा एक सिंपल क्वेश्चन से. अकॉर्डिंग टू गीता's principles, according to गीता's teachings, how do you identify a real good person in this modern age? एक अच्छे इंसान की पहचान हम कैसे कर सकते हैं गीता के हेल्प के थ्रू से? डेफिनेटली हितेश जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और गीता के आधार पे एक अच्छा व्यक्ति वो कहलाया जा सकता है जो अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से समझता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से समझता है, और गीता के ये 5 विषयों को अपने जीवन का आधार बनाते हुए अपना जीवन जीता है. तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर अपना जीवन जीना चाहता है, सो ही हैज़ टू बी हैविंग ए क्लैरिटी ऑफ हिज identity, his responsibility. He has to have a clarity of the position of the supreme, और कैसे उस सुप्रीम के साथ में अपना एक जो भूला संबंध है उसको फिर से स्थापित किया जा सके. One has to be aware about the power of time, which due to the lack of time we couldn't discuss much on. Right. But then how the kala or the time factor is just dragging us along, and it's not that we have unlimited time at our disposal. हम हर किसी के पास में हमारे पास एक limited amount of time है which has to be used very very intelligently. तो समय का सही उपयोग करके अपनी स्थिति को जानते हुए, भगवान के पद को जानते हुए कैसे कर्म किए जाएं ताकि अपने सिचुएशन को इस प्रकृति से उस प्रकृति में, इस दुख भरी स्थिति से एक शाश्वत प्रेममयी स्थिति में हम अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकें. सो इन माई अंडरस्टैंडिंग अ गुड पर्सन इज़ नॉट जस्ट हु इज़ डूइंग पुण्य, बिकॉज पुण्य भी करेंगे तो भी वो पुण्य को भुगतने के लिए हमें दुख खाले में
रहना पड़ेगा. You just can't help it. You will be bound to accept the good things, but being here in this world of misery. But then one who understands one's all-round responsibilities, so one uses his time intelligently to perform recommended activities that are recommended by the Shastras, as per one's identity and as per one's capabilities, to connect to the Ishvara and thus transport himself or change his position to Vaikunth. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गीता के कुछ कह सकते अनसुलझे क्वेश्चंस को हमने इस पॉडकास्ट में लिया था और प्रभु जी ने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के थ्रू हमें उन अनसुलझे क्वेश्चंस के आंसर मिले और साथ ही में एक अलग नज़रिया मिला भगवत गीता को समझने का, उसे जानने का, और एक अलग नज़रिया मिलेगा इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा देखते हैं तो अपनी लाइफ को और आगे लेके जाने का. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका कीमती समय दिया और इस पर्टिकुलर जो धरोहर है हमारे पास भगवत गीता की, उस पे आपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के साथ हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया. और आशा करता हूँ, जो मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि पहले क्वेश्चन का आगाज़ इतना अच्छा हुआ है तो अंत काफ़ी अच्छा होगा. और ये पिछले 2 घंटे से मैं फिर से कहूँगा ये अंत नहीं है मेरा और आपके इस पॉडकास्ट के सिलसिले का. आशा करता हूँ आगे कई सारे ऐसे पॉडकास्ट हम करें और उसके लिए अभी से ऑन शूट आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि फिर से एक बार मुलाकात होगी इस धरोहर के साथ और कई सारे अब तक अनसुलझे जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ हम सुलझ पाए. सर मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद हितेन जी फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट and hope that my insights will be beneficial for all of you. Thank you all very much also. Thank you once again. Hare Krishna.